बीते दिनों में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ ऐसे स्पीचेस दिए हैं जो कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं कि वे अपने खिलाफ लगे एलिगेशंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं और लोगों तक अपना सच पहुंचा रहे हैं। ये सब बातें अब इस लाइट में काफी फेमस हो रही है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के टेन्योर का सिर्फ एक हफ्ता ही बाकी है और जिसमें वे काफी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स भी पास करेंगे। जहां उनके जजमेंट्स का इंतजार हो रहा है, वहीं हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी के विजिट टू हिज रेसिडेंस पर अपना जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे मीटिंग्स में जुडिशियल मैटर्स नहीं डिस्कस होते हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सीजीआई की ये क्लैरिफिकेशंस बिल्कुल भी नहीं पसंद आए और इसमें एक नाम सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का भी शामिल होता है, जिन्होंने सीजीआई को फटकारते हुए उल्टा ट्वीट किया है कि पैथेटिक टू सी द सीजीआई नीडिंग टू से इन पब्लिक दैट ही डिडंट डिस्कस एनी ऑफ द मेनी पेंडिंग पॉलिटिकल केसेस with the PM when he invited him privately to his residence for Ganesh Puja with 4 cameras in tow in violation of the code of conduct for judges, and then he wonders how his legacy will be seen. कई लोगों ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण से अग्री भी किया है कि भले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम मोदी के बीच कोई डील नहीं स्ट्राइक हुई होगी, लेकिन पब्लिकली और एक दूसरे के घर ऐसे इवेंट्स में जाना सही नहीं है, वो भी तब जब सीजीआई हमारे देश के टॉप जज है एंड जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। अब जहां लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इतनी क्लोज ना रहे, वहीं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने स्पीचेस में कहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में सीजीआई ने इस बात पर काफी जोर दिया कि भले जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है और एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल साइड में दूरी रखती है, इसलिए भी क्योंकि कोर्ट्स में मैक्सिमम केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े रहते हैं, वहीं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में क्लोजली काम करती है। अब इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट काम है जजेस अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, जहाँ अभी बीते दिन ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने खुद से कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया था। वहीं अब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जजेस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के टाइम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी रहती है जो हेल्प करती है अच्छे से जजेस को सिलेक्ट करने में। सीजीआई ने अपने स्पीच में ऐड किया कि समटाइम्स अ कंसेंसस इमर्जेस ऑन अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, एट अदर टाइम्स इट मे नॉट। दिस शोड द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम। अ ग्रेट डील ऑफ मैच्योरिटी इज शोन एट डिफरेंट लेवल्स बाय बोथ द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव ऑन द इशू। जिसके साथ ही सीजीआई ने समझाया भी है कि कैसे अगर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के हेड्स मिलते हैं और एग्जाम्पल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और पीएम नरेंद्र मोदी का ही ले लेते हैं, तो वे बैठकर जुडिशियल केसेस की बातें डिस्कस नहीं करते और इतनी मैच्योरिटी लोगों में बनी हुई है। जिसके साथ ही सीजीआई ने ऐड किया कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आए दिन उंगलियां उठना बहुत ही कॉमन बात है और बहुत आसान हो जाता है ये उंगलियां उठना जब कोई इंस्टीट्यूशन 75 इयर्स से खड़ा हो। जिसके साथ ही सीजीआई एडेड, एवरी इंस्टीट्यूशन हैड इट्स पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वाज केपेबल ऑफ बेटरमेंट। However, the scope for institutional improvements should not imply that there was something fundamentally wrong with the institution. It was only being done to develop a better system. एक और क्रिटिसिज्म अगेंस्ट जजेस की पॉइंट को उठाते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आए दिन वेकेशन लेने के लिए पूरी जुडिशरी को फटकार पड़ती है, पर वेकेशन का मतलब ये नहीं है कि जजेस छुट्टी पर रहते हैं। जिसके साथ ही एडेड, जजेस आर नॉट गैलिवेंटिंग और गोफिंग ऑफ ड्यूरिंग वेकेशंस। दे आर डीपली कमिटेड टू देयर वर्क इवन ऑन वीकेंड्स, ऑफन अटेंडिंग फंक्शंस, विजिटिंग हाई कोर्ट्स और इंगेजिंग इन लीगल एड वर्क। इसी के साथ एक नजर डालते हैं कि सीजीआई ने अपने रीसेंट स्पीचेस में क्या कहा है। फेडरलिज्म इज assumed to be too legal a theme. Conversations around which should be confined to lawyers and law people. But I'm delighted that LawChakra is demystifying this myth by allowing me to speak on federalism. The Constitution is not simply a document that belongs to the realm of law. There must be a steady flow of conversations about the Constitution and the principles underlying the Constitution. In my perception, everyone who has given to themselves the Constitution, as we do because we the people have given us the Constitution, is impacted by every single choice that the Constitution makes. As a citizen and as a democratic participant, these constitutional conventions and conversations contribute towards creating a robust doctrine of law. One such constitutional choice which our framers made
was the choice of a political division of power, federalism. It is essentially understood as a system of the division of power in an organization such as a government, where political power is divided between a central authority and various constituent units in the country. Federalism gained popularity as a system that was conducive to the facially competing values of uniformity and decentralization. These were the key competing values: uniformity on the one hand and decentralization on the other. The concept of federalism then achieved what various scholars have called some degree of political integration based on a combination of self-rule and shared rule. I think the concept of self-rule and shared rule is of particular significance when we speak in the portals of Mumbai University. हालांकि उनकी पीएम मोदी विजिट के सफाई के बावजूद लोग खुश नहीं दिखे हैं और इस बारे में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्या कहा था, एक नजर डालते हैं। I have great respect for the present Chief Justice. I can say without any hesitation that he is a man of great personal integrity. But I was really surprised when I saw this clip that was going viral. And I have some issues on principle. Issue number one, no public functionary, whoever it may be, especially those who hold the highest office in the country, it's the President of India, the Prime Minister of India, the Chief Justice of India, whoever, should not publicize a private event. I'm sure that maybe the Chief Justice may not have known that this was being publicized. That's sad. The second thing is, the Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event, because the Prime Minister and those he must have consulted should and must have told him that this may send a wrong signal. Because the issue is not individual, the issue is what impact such a clip has on the minds of people. And if there is gossip around it, then it is not fair on the institution. इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following LawChakra.